कैसा कैसा ये कैसा 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 ये कैसा कैसा ये कैसा कैसा Alright guys, welcome back to Trading for a Dream, the channel which will help you grow your investments in a timely manner. So आज के वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, starting from global news to what dividend stocks we need to pick in the coming days, as well as I've removed 3 swing trading stocks for you, which I'll help you out in the second part of the video. Okay, so let's begin. So first let's focus on today's market. So like I said on Friday as well, Nifty, Bank Nifty, Finance Nifty and Sensex, all of them are going to be in a range because globally जो updates है, starting with the US bond yield, तो US का जो 10-year treasury yield है, it's almost at a highs of 4.34%. So you can understand कि, if you're getting 4% returns in a safe investment like example bond yields, why would someone invest in equities which is more risky? So because of the bond yield as well as the dollar price is increasing, dollar index is increasing, so that is putting some kind of pressure on equity markets. But as soon as the bond yields cool down and the dollar cools down, you'll see equity markets booming. And I see that there's one good trigger which is going to be on 23rd of August. And as you all know, that is when Chandrayaan 3 is planning to set base. So as per expectations, around 6 PM, 6 baje ke aaspas, Chandrayaan should land on the moon. And I'm sure this would be a good news which is going to trigger the equity markets and our stock market to go into a better position. And I'm sure FIIs and DIIs would be focusing on this, and they would also show their respect in bringing the market into green and through buying more stocks. And the reason Chandrayaan is in so much of focus is because Russia also attempted to land their mission on the moon, which was called as Luna 25, but unfortunately it crashed during the landing phase. So that's why all eyes on India right now, all eyes on Chandrayaan, and hopefully this mission should be successful. So let's pray for that. Okay, now let's focus on some more news. So FIIs throughout the month of August have been quite bearish, and today also FIIs has sold around 1,901 crores, and in comparison with that, DIIs ने purchase किया around 626 crores. So overall आज selling pressure ही था market में. Okay, now focusing on the next thing, which is, I'm sure you might have heard that there's a new IPO which has come out, which is called as Pyramid Technoplast. इसका जो grey market premium है, I'll let you know, but before that, इसका जो price band है, the issue price is from 161 rupees to 166 rupees. So if you want to apply for the IPO, you always need to select the cutoff price, which is 166. As of now, इसका जो premium है, that is around 17%. You can say like 28 rupees premium चल रहा है. And if you take my recommendation, I would say कि let's wait for tomorrow. Tomorrow is the last day. And if the grey market premium increases, then we can think of applying for this IPO. But looking at the returns and looking at the industry, my recommendation would be to avoid this IPO. There would be much more better IPOs in the future. हम उन पे focus करेंगे. So as of now, ये IPO को आप ignore भी कर सकते हो. Okay, next good news जो आज का था, that was Jio Financial Services आज list हुआ stock exchange पर. For the ones who don't know about it much, जैसे आपको पता है कि Reliance Industry is a conglomerate, which means कि उनके अंदर बहुत सारे industries है. So Reliance is into petroleum, Reliance is into telecom like Jio services, Reliance is also into financial services, and उनके बहुत सारे अलग अलग divisions भी है. So Reliance has decided to delist or separate their business, जो उनका finance business था, and they have listed it separately on
the exchange. So the one which is separated is called as Geo Financial Services. आज वो स्टॉक आज लिस्ट हुआ है एट द प्राइस ऑफ 265, बट उसके बाद से उसमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया एंड इट वाज ऑन अ लोअर सर्किट एज वेल. तो आज 5% का लोअर सर्किट था जियो फाइनेंशियल में. बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें then this stock would be a good pick for long term and short term swing trading. We will let you know the levels. I think around 210 should be the ideal level to buy this stock. So फिलहाल उसका प्राइस अराउंड 240 चल रहा है. सो थोड़ा सा और करेक्ट होने दीजिए एंड देन यू कैन प्लान ऑन इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक. ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ फॉर द वंस हु लव डिविडेंड. सो देयर आर 2 stocks which you need to keep on focus. पहला जो स्टॉक है दैट इज़ मनप्पुरम फाइनेंस. सो ये गोल्ड लोन्स में डील करता है मनप्पुरम फाइनेंस एंड इनका जो डिविडेंड है दैट इज़ 80 पैसे एंड उनका जो एक्स डेट है दैट इज़ August 23rd. सो कैसा होता है कि बिफोर द एक्स डेट यू नीड टू बाय द स्टॉक. सो अगर उसका एक्स डेट है 23rd of August तो आपको उसके एक दिन पहले शेयर खरीदना होगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग डिविडेंड फ्रॉम द स्टॉक. सो इसका जो लास्ट डेट है दैट इज़ टुमारो. इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन पिकिंग अप द स्टॉक, टुमारो इज़ द लास्ट डे टू इन्वेस्ट इन मनप्पुरम फाइनेंस इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ डिविडेंड. And the next stock would be RailTel. So RailTel Corporation of India. Again, railways का stock है. We have recommended the stocks multiple times, like IRFC, RVNL, IRCON. Same way RailTel भी एक stock है which you need to keep your focus on. इसका dividend price है around 1 rupee and 1 rupee 5 पैसे. And इसका जो ex date है that is August 24th. So you still have time to invest in the stock until the 23rd of August if you want to get dividend from this stock. ठीक है, now let's focus on the swing trading stocks. So I've picked out 2 good stocks and 1 risky stock for you. So पहले हम risky stock के साथ start कर लेते हैं. So the risky stock is called as Peninsula Land. Okay, ये जो stock है that deals into real estate agency. इनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी मेजर सिटीज़ में हैं एंड यू कैन विजिट देयर वेबसाइट, यू कैन सी हाउ दे ग्रो. उनका यूजुअली जो लोकेशंस है दैट इज़ अराउंड मुंबई, पुणे एंड यूजुअली इन महाराष्ट्र. नाउ द रीज़न आई पिक्ड अप दिस स्टॉक इज़, अगर आप इनका चार्ट देखोगे यू विल सी दैट दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट द लेवल्स ऑफ 13 and 14 rupees around the month of April this year. सो 13 रुपीज़ एंड 14 पैसे पे वो चल रहा था अराउंड अप्रैल एंड अगस्त में इट्स ट्रेडिंग अराउंड 36 रुपीज़. सो अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे यू विल सी कि अप्रैल से लेके अब तक दिस स्टॉक ने आपको रैली दिया है अराउंड 185%. एंड नॉट ओनली दिस बट दिस स्टॉक स्टिल सीम्स टू बी इन अ बुल रैली एंड दिस स्टॉक आई वुड रिकमेंड ओनली फॉर रिस्की इन्वेस्टर्स. You should start with a small amount. आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं. You can start with minimum amount like 10 quantity, 20 quantity. That's the most that you should invest in. ठीक है, ये स्टॉक में. So 10-20 quantity आप खरीद सकते हो ये स्टॉक में at the price of 36 and इसका नियर टर्म जो टारगेट्स बन के आ रहा है that is around 40 would be the first target, 44 and 48. Okay, so ये जो प्राइस है ये प्राइस से अगर आप 44 कैलकुलेट करोगे ऑलमोस्ट 10 से 15% का आपको अभी भी रिटर्न्स मिलने का चांस है इन पेनिनसुला लैंड. सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑन योर रेडार बट अगेन लाइक आई सेड दिस इज़ ओनली फॉर रिस्की इन्वेस्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट वुड बी KEI इंडस्ट्रीज़. KEI इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखोगे इसका जो चार्ट पैटर्न है यू विल सी कि डेली टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम बना के वो ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है. सो 2600 के लेवल से उसने एक करेक्शन दिया, ऊपर करने की कोशिश किया, वापस सपोर्ट लेके नाउ इट्स रेडी टू रैली. सो यू कैन पिक दिस टॉप आर दिस लेवल्स. उसका जो प्राइस है फिलहाल 2522 के आसपास है एंड यू कैन गो फॉर नियर टर्म टारगेट्स एज बिग एज 2600, 2750 and 2800 as well in the coming months. Okay,
एंड लास्ट जो स्टॉक आपको फोकस में रखना है दैट वुड बी टाइटन. सो टाइटन आप सभी को पता है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है एंड करेंटली उसका जो प्राइस चल रहा है दैट इज़ अराउंड 3078. राकेश झुंझुनवाला जी के भी ये फेवरेट स्टॉक हुआ करते थे. एंड इफ़ यू लुक एट द चार्ट पैटर्न यू विल सी कि ये एक अप ट्रेंड में है. उसने करेक्शन लिया, सपोर्ट लिया अराउंड 2900 के आसपास एंड अगेन ये मोमेंटम में रेडी है टू गो अहेड फॉर टारगेट्स एज बिग एज 3200 तक. ओके. एंड टाइटन का बेस्ट पार्ट ये है कि अभी नाइट नाउ वी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. सो आगे के जो महीने हैं दैट इज़ मोर ऑफ फेस्टिव सीजन्स लाइक गणेश चतुर्थी, देन देयर वुड बी दिवाली, देन देयर वुड बी वेडिंग सीजन्स फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स. सो ये जो पीरियड है सेकेंड हाफ जो होता है हर साल का दैट इज़ यूजुअली बेनिफिशियल फॉर स्टॉक्स विच आर इन गोल्ड, विच आर इन टू फुटवेयर, विच आर इन टू क्लोथिंग. सो ये सारे स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस रहता है. एंड टाइटन आप सभी को पता है इज इन टू सन ग्लासेज, इज इन टू गोल्ड एज वेल एंड इन टू वॉचेज़, प्रीमियम वॉचेज़ ऑल्सो. सो ये स्टॉक गिफ्टिंग में भी बहुत काम में आता है. सो कीप योर फोकस ऑन टाइटन एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग दिस, अक्यूमुलेट दिस स्टॉक एंड आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के देगा इन द नियर फ्यूचर. Alright guys, so that was all the information for today. For the ones who are not joined the WhatsApp group yet, I would advise you to please join the WhatsApp group. हम usually monthly basis पे at least 2 times a month we have Google Meets and we try to solve all your doubts which you have. Usually 1 से 2 घंटे का session रहता है which we organize. And if you have any questions in mind, you can just drop in on the WhatsApp group or you can drop it on the YouTube comment section and we will get back to you. ठीक है? And for the ones who have not subscribed the channel yet, please subscribe कीजिए so that we can help to grow this channel. Okay? So that was everything for today. We'll see you again tomorrow. Till then, you take care and Jai Hind.